once we have known that our सर हाँ सर मेरे ये समझ नहीं आया, ये ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई है इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई है, ये कैसे आया सर? क्या क्या फिर से बोलो। तो ये एन में ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी यू वाई, यू क्या था? यू था ए ई की नहीं, पावर ए एक्स ए नहीं कॉस था, बी ए वाई, नहीं था, ए नहीं था भाई। यू था ई टू द पावर ए एक्स cos by कॉस बी वाई। कॉस बी वाई। और इक्वेशन क्या है तुम्हारी? यू एक्स एक्स इज माइनस यू वाई वाई। यस सर। तो ये मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहली बार जी करोगे सर। तो आ जाएगा ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी वाई यस कॉस, सर। और एक बार और करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर ई की ई टू पावर द ए पावर एक्स। कॉस ऑफ बी वाई। ठीक है, और इसको यस सर। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा b e टू द पावर ए एक्स माइनस साइन बी वाई, और एक बार और यस करोगे सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी वाई। ये क्वेश्चन बन गई तुम्हारी, ओके सर। और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो b की वैल्यू प्लस माइनस ए हो गई। ओके सर। ठीक है, ओके सर। किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार किया, फिर x के रेस्पेक्ट में एक बार और किया, तो ये यू एक्स आया, ये u डबल एक्स आ गया। ऐसे ही ये यू वाई आया और ये यू डबल वाई आ गया। क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है ना? यस सर। Now I want to discuss, because for analytic functions Taylor series was involved, so I want to discuss with you Taylor series. And specifically I will discuss complex Taylor series. Okay, so Taylor series is when you write a function fz. So this is analytic series, actually analytic, defined and differentiable. So Taylor series is, suppose you have a function fz and you want to write infinite series for fz in which derivatives of fz are involved. That means fz, f double dash z, such functions are involved. आप क्या करना चाहते हो? एक फंक्शन fz के बदले you want to write an infinite series in which the derivatives of the functions are involved, and you want to write it near a point z naught. You want to write this about z naught. So this is very important, that this about is the point जिसके रेस्पेक्ट में आप
इनफाइनाइट सीरीज लिख रहे हो, तो यानी कि अब जो हमारा एफ जेड होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, सम ए नॉट प्लस ए वन z minus z naught plus a2 z minus z naught square plus dash dash dash. The series will become like this. और z naught की importance ये है कि you can only calculate the value of the function near this point, in the neighborhood of this point. So like this is z naught and this is epsilon. Epsilon is very small. So you can only get the value of fz in the neighborhood of z naught. Because if you go far from z naught, then all the terms will become important. But if you are close to z naught, so z minus z naught will become a small number, and its square, cube, and power 4 will become smaller. So you can drop few terms and you can get the value. Otherwise, each and every term will become important and the series may not converge. So this is very, very important point about Taylor series. That आप point ऐसा select करते हो. Otherwise, you shift the point. There is no necessity that you have to write the Taylor series about origin only, or you have to write the Taylor series about one only or two only. You can shift the entire origin, okay, near the point where you want to handle that function. और ये जो values हैं a0, a1, a2, they can be very easily calculated by the derivatives. It will become f z0 plus z minus z0 power 1 factorial f dash z0 plus z minus z0 squared over 2 factorial f double dash z0 plus dash dash dash. So this will be the coefficient, that a0 is f z0, a1 is f dash z0, a2 is f double dash z0, like that. So in a very, very compact form, we can write the Taylor series as summation n is equal to 0 to infinity z minus z0 to the power n over n factorial f n z0. This can be a Taylor series for any function fz near z0. If this z0 is origin, then it can be also known as Maclaurin series. It is known as Maclaurin series. Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. So few Taylor series or Maclaurin series we already know. So Taylor series निकालने के दो तरीके. One is this infinite series that I told you. Second can be binomial expansion. अगर हम बहुत ही intelligently use करें, so sometimes we can write the Taylor series by just using the binomial expansion. All right? Yes, sir. Sometimes we can write the Taylor series by just using binomial expansion. So these are the two methods to write the Taylor series. So जिस point के about Taylor series लिखी जाती है, उस point पे बिल्कुल ही defined होनी चाहिए, because it is analytic. So it should be defined. Now, I hope that you understand that these things which we write, z minus z cube by 3 factorial plus dash dash dash,
or this one cos z is equal to 1 minus z square by 2 factorial plus dash dash dash, or e to the power z is 1 plus z square by 2 factorial plus dash dash dash. These all are Taylor series about z is equal to 0. ये सब क्या है? टेलर सीरीज। ये सब टेलर सीरीज हैं। अब तो ज्यादातर आप ओरिजिन के अबाउट काम करते हो तो यू कैन यूज दिस सीरीज इफ यू वांट, बिकॉज if you are not close to origin, so you know all the higher terms will become very very important. You can't drop them. So आपको याद होगा कि बहुत बार आप sin z को z यूज कर लेते हो, राइट? हाँ, यस सर। but this can be done only when this z cube is small. So that means this z value sin z can be only written as z if z is very very small, if it is close to 0, otherwise you can't do that. Okay, ये बात समझ रहे हो सभी लोग? यस सर। So when you make these approximation, you have to be very very careful. You can only do the approximations when higher terms become very very small, and they can be only small when they are very close to the point about which you have expanded, and in this case you have expanded about 0. So that means these z should be very very close to 0. अब अभी अगर मैं थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्ट करूं तो इस पूरे फंक्शन की सिमेट्री चली जाएगी. Like if I take a function fz is equal to sin z, but I want its Taylor series about z naught is equal to pi by 4, then you will see your entire Taylor series will become completely different. Why? Because this time fz naught will become 1 by root 2. F dash z will become cos z. So f dash z naught will become 1 by root 2. F double dash z will become minus sin z. So f double dash z naught will become minus 1 by root 2. F triple dash z will become minus cos z. So f triple dash z naught will become minus 1 by root 2. So far, so on, so forth. So f of z will become first term fz naught, then plus z minus pi by 4 by 1 factorial into f dash z naught, which is 1 by root 2, then minus z minus pi by 4 square by 2 factorial 1 by root 2 minus 1 by root 2 z minus pi by 4 power 3 by 3 factorial dash dash dash. This is the Taylor series, which is completely different. You can see. It is completely different. पहले से बिल्कुल बदल गई. Yes. यस सर। एक बार ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछो.
No doubt. Okay. So we can also write Taylor series like this. Using binomial expansion. Suppose they give it like this. Fz is equal to 1 upon 1 minus z, and z is less than 1. We have to write the Taylor series for this. So because z is less than 1, we can use Fz is 1 minus z to the power minus 1. Right? Yes, sir. And then we can use 1 plus z Yes. square plus z cube plus dash dash dash. This is the Taylor series. Or suppose they have given Fz is equal to 1 upon z minus 1 and write the Taylor series about z naught is equal to iota. So instead of going into the derivatives, we can manage by taking minus common and 1 minus. It should be z minus iota, right? Iota के about लिखना है? Yes, sir. So plus iota is coming extra. So what I should do? 1 minus iota. I should do it like this. देखो जरा. Now it's same z minus 1. If I open it. Yes, sir. Yes, sir. So now I will take 1 upon iota minus 1 common. It will become 1 minus z minus 1 upon iota minus 1 to the power minus 1. 1 minus iota, sir. Hmm? 1 minus iota. Z minus iota upon 1 minus iota. हाँ सर 1 माइनस आयोटा आएगा ना नीचे. यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा माइनस 1 प्लस हो जाएगा ना. This will become plus. Yes, sir. Is it okay now? Yes, sir. अभी सही है. And it will become 1 upon iota minus 1 1 minus z minus iota upon iota minus 1 plus z minus iota upon iota minus 1 square minus z minus iota minus 1 cube plus dash dash dash. This is the Taylor series. I have used 1 plus x to the power minus 1 is equal to 1 minus x plus x square minus x cube plus dash dash dash. Please check this. Sir, Yes. sir, please explain the second step, please. Sorry, Sir, please explain the second step. which step? Second one. Yes, sir, that one. मुझे लिखना है
z iota के अबाउट। तो टेलर सीरीज में आपने देखा होगा जिसके अबाउट लिखते हैं वो नजर आता है ना, z माइनस जेड नॉट, z माइनस जेड नॉट स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट क्यूब। तो इसलिए मैंने यहाँ z माइनस आयोटा लिख लिया। अब मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता क्योंकि हमारा फंक्शन तो ये है। तो यहाँ पे है माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया 1/1 माइनस जेड। यहाँ z माइनस आयोटा लिख दिया तो आयोटा एक्स्ट्रा है प्लस आयोटा, तो यहाँ माइनस आयोटा लिख दिया ताकि कैंसिल हो जाए। इसको खोल के देखो, यही आ जाएगा। Okay, sir. Thank you. तो why I have done this? Why I have written z minus iota? Because in Taylor series you see z, मैंने बोला था ना intelligently if you use binomial expansion you can end up writing Taylor series. So इसको set करना होगा. So because I need z minus iota, so that's why I have put it here. I have managed to write it and then I have applied binomial expansion. बाकी सभी लोग देखो ध्यान से। Tell me. Is it clear? Yes, sir. So this was just to tell you that even the binomial expansion को अगर हम अच्छे से use करें, so that may give us Taylor series. Binomial expansion, if used intelligently, may result into Taylor series. Let us do one more. Fz is equal to log of cos hyperbolic z, z naught is equal to 0. You have to write it about 0. So कैसे निकालें? F of 0 कितना होगा? Log of cos hyperbolic 0. 0 आ जाए। 0 0. Then f dash 1 upon cos hyperbolic z 10 into hyperbolic. sin hyperbolic z, which is tan hyperbolic z, and f dash z, fz0 will become 0 0. Then f double dash z will be 1 minus tan hyperbolic square z, derivative of tan hyperbolic z, which is in fact sec hyperbolic square 1 minus f dash z whole square. Okay? So when I write f double dash 0, it will be 1 minus f dash 0 whole square, which is equal to 1. Then f triple dash z, it is minus 2 f dash z, f double dash z.
So f triple dash 0 is 0 0. because f dash z is 0. Then f4 z is -2 first function derivative of second plus second function derivative of first. This is equal to, this one becomes 0, f double dash will become 1, so it will become -2. So what will be fz? fz is, पहला टर्म कहाँ अपीयर हुआ? डबल, डबल डैश पे तो हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फिर into 1. देन सर f4 पे आ गया तो माइनस z टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल -2 भी प्लस सर -2 आएगा -2 z4/4 यस सर -2 plus dash dash dash. Okay. Is that okay, bhai? यस सर Anybody has any doubt in this? Please ask. सारे एग्जाम में टेलर सीरीज वैसे तो यूज ही बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है टेलर सीरीज का, तो इसलिए टेलर सीरीज जानना बहुत जरूरी है। इसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन आस्क। सर हम्म, हेलो। हाँ हाँ सर, आपने f ट्रिपल डैश में -2 f डैश वो वाला कैसे प्लीज बताएंगे? एफ ट्रिपल डैश यस सर। ये है एफ डबल डैश, जिसमें मैंने tan हाइपरबोलिक z को f डैश z यहां से लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। फिर ये है माइनस और यहाँ स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 2 2 f डैश x और फिर f डैश x का f डबल डैश, इसलिए -2 f डैश z f डबल डैश z। नहीं समझ आया? सॉरी सर, मैं मिस कर रही हूँ। मान लो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे? 2 2 साइन साइन x cos x। ठीक है। ओके, यस सर। ओके सर। सो ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा, वी विल डिस्कस लॉरेंट सीरीज, और जिसके बाद फिर सारा कंटूर इंटीग्रेशन और उस सब चीजों का कॉन्सेप्ट उसी से आता है। दिस इज काइंड ऑफ वन पार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड। Another part will consist of Taylor series, singularities, residue, and integration related to that. So that I will discuss tomorrow. Okay. Thank you. थैंक यू so सर much. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड Thank नाइट you. सर। Good night. Thank you.